कोलकाता के ईरान सोसाइटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डेमोक्रेसी पर एक पैनल डिस्कशन हुआ। इस डिस्कशन में तिस्ता सितलवाड, राम पुनिया, जस्टिस अशोक गांगुली और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपनी बातें रखी, जिसमें खुशनवीस भी इस मौके पर अपनी बातें रखी। आइए सुनते हैं कि इन लोगों ने हिंदुस्तान की दस्तूर और जमहूरियत के बारे में क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान को अपने हक के लिए हम हिंदुस्तानियों को ये इजाज़त है कि हम हक के लिए आवाज़ उठाएं। इसी बारे में अशोक गांगुली ने जराए से अपनी बातें रखी। That in our democracy, in our constitution, in our court, the central figure must be the common man. The entire thing exists for them. Man does not exist for this system. Our democratic system, which we are trying to develop, as they say in the din and bustle of Indian democracy, the voice which must be most eloquently heard is that of the common man, if democracy has a meaning. Now, in today's panel discussion, it has been two concepts of very wide import have been dovetailed. That is democracy and the Indian Constitution. Now I shall make my presentation. I shall say something in today's panel discussion. And after what I say, if you have any question, I will try to answer. Today's topic is of seminal importance to understand the nature of our polity. It is a limited government restricted by written constitution and the laws. Constitution and democracy, to my mind, are two sides of the same coin. We often say we have a parliamentary democracy, but in fact, in my view, it is completely a constitutional democracy, only parliamentary in form. Why I say so, I'll try to explain to you. Every democratic institution in a country is a creature of the Constitution, are completely structured under and controlled by the Constitution. Election to all these bodies, except of course the High Courts and the Supreme Court, where there is no question of any election, are controlled by an election commission set up under Article 324 of the Constitution. And such election is held on the basis of adult suffrage as provided under Article 326 of the Constitution. Under our constitutional dispensation, the entire gamut of democratic process is controlled. This debates by saying, and I quote, India is bound to be sovereign, it is bound to be independent, and it is bound to be a republic. Democracy is therefore the core constitutional value in our everyday functioning. Some say this is a legacy of the British colonialism, but in my view, the role of Indian freedom movement is the guiding spirit of democracy in the Constitution. This code at times faltered, and it did not always uphold constitutional mandate for free and fair election. Section 123(3) of the Representation of People's Act 1951, which controls election, prohibits canvassing for votes on grounds of religion. But kindly see one thing very interesting. But unfortunately, when Manohar Joshi, a BJP stalwart, asked for votes in election with a promise to establish the first Hindu Raj in Maharashtra,
It's clearly a call for vote on the ground of religion. Strangely, the Supreme Court held, upheld his election by holding that such an appeal is reprehensible, but it is not a corrupt practice, and thus set aside the Bombay High Court judgment which cancelled his election. The Bombay High Court cancelled his election on this ground. The Supreme Court upheld him by saying that such a call is reprehensible but not a corrupt practice. When powers of Election Commission were sought to be curbed by Parliament in a later judgment in People's Union of Civil Liberties. Again, in the case of SR Mumbai, the Supreme Court upheld the democratic norms by declaring dissolution of three assemblies, state assemblies, illegal, and thus prevented the undemocratic practice of toppling democratically elected governments. At the same time, it declared that secularism is the soul of our Constitution. Not only a part, it's the soul of our Constitution, which is consistent with the concept of constitutional pluralism. As our Constitution was adopted against a backdrop of sectarian violence, an inclusive and ever expansive expression in a transformative document bringing about a social renaissance. That is why, guided by this constitutional morality, Honorable Supreme Court in Manoj Narula versus Union of India, after noticing massive corruption in the election process, reiterated are not doing anything to change this situation. Rather, by their governance, the disparity is increasing. Therefore, common people have to fight for their rights to fulfill the constitutional goal of democracy. Here, if I may quote Joseph Story's immortal words about the Constitution and people's duty to protect it. These words were said by Mr. Sachidanand Sinha in the inaugural address in the Constituent Assembly debates. These words said centuries ago are still extremely relevant for our democracy and for our Constitution. I'm just reading out. The structure has been erected by architects of consummate skill and fidelity. Its foundations are solid. Its compartments are beautiful as well as useful. Its arrangements are full of wisdom and order. Its defenses are impregnable from without. It has been reared for immortality. The work of man may justly aspire to such a title. But the learned author has given a warning by saying, it may nevertheless perish in an hour by the folly or corruption or negligence of its only keepers, the people. I thank you for your patience. And if you want, at the end of today's discussion, panel discussion, if you ask me any question, I'll try to answer. Judge. Nobody has given you by your mercy. This is nobody's gift. This is something which you have earned. These are your rights. You have to protect it. If the state fails to protect, you have to protect it. It's a sacred duty to protect your own right. वो हर कानून से ऊपर है, हर शख्सियत से ऊपर है, हर इदारे से ऊपर है। ये हक है, आप पर एहसान नहीं है। इसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई महीनों तक मेहनत की है और आप इस जिस्म को देखें
जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 103 बार ऑपरेशन हुआ है इसका, मगर अभी तक सलामत है, अभी तक मजबूत है, अभी तक बीमार नहीं है। इसलिए कि रूह जो डली है वो अवामुन्नास की रूह है, और जिस दस्तूर में अवामुन्नास की रूह रहती है वो दस्तूर मरता नहीं। लोग अपनी अपनी दुनिया बना लें, आप ख्याली में रहें। बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं आज इस मुल्क में, लेकिन मैं आपको एक वकील बताऊं कि जब तक ये दस्तूर असासी आपके हाथ में है, और हम पर भी लाजिम है कि हम जाने, फेसबुक की दुनिया है, व्हाट्सएप की दुनिया है, अब तो किसी के पास जाना भी नहीं है। आप जानिए कि आपका हक क्या है, अपने हक को पहचानिए। जज साहब की तकरीर का लब्बो-लवाब ये था कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मुल्क में कुछ नहीं। दस्तूर बना आपके लिए, कानून बनता है आपके फलाह बहबूद के लिए, और जो कानून इंसानी फलाह बहबूद के लिए न बने उसे खारिज कर दिया जाता है। हमने देखा है हिंदुस्तान में टाडा आया था, आज नहीं है, पता चला कि नहीं, गलत इस्तेमाल होता है, हटा दिया गया। तो इस तरह के कानून बनते रहेंगे, इस तरह की तानाशाही हुकूमतें रहेंगी, बनाती रहेंगी, खारिज करते रहेंगे, जब तक के एक मजबूत और फाल सुप्रीम। These things are usually associated. I belong to another area, economics, but I know that economics is closely related to all the areas on which the signs of crisis are now being shown in India. India, as I conceive, is a country in which there is diversity in culture, diversity in religion, diversity in human behavior, diversity in norms and nuances in the society. Diversity is the key to understand India, a diverse country. And this diversity is captured by the term "we" in the Constitution. When Constitution starts with "we," that "we" is the diversity. So many things are there. And we are proud to belong to such a country where there is so much diversity. And if there exists diversity, obviously, along with this thing, the society has to go with a particular culture of tolerance. Mahasabha. Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League Party, they invented the concept of "we," the Muslim. On the other side, Savarkar and others invented a concept, "we," the Hindus. Nobody asked any Indian. There was no plebiscite. This did not come in the public debate also. That why this "we" could be divided in Hindu "we" and Muslim "we." Was there a plebiscite during 47? No, there was riot, but no vote. They did not ask us what we are. So this is how they simply evaded this question, who this we are, and redefined it in a way in which there is one "we," the Hindus, and the other "we" is the Muslims. Under such a situation, kudos to the framers of the Constitution who realized or who understood that there is a concept of India where all of us could live together, live with varied culture, and that was defined under the new India, the constitutional India captured history.
is included in this definition. For this, we needed a republic. We defined a republic, a democratic republic. For this, undivided rule. That we define democracy which could be captured in terms of a constitution. The essence of this thing had been liberty, equality, fraternity. Liberty, individual liberty, equality and fraternity. These three basic pillars on which we, the people of India, understood how we would get a country, a new country after 1947. There would be equality, there would exist fraternity, individual will have the liberty to speak, liberty to write, liberty to have his own livelihood. Unfortunately, and that is very unfortunate, that on these issues of liberty, equality and fraternity, we had so many things to do, unfulfilled tasks. Individual liberty was curtailed many times, in many occasions, in many ways. Fraternity has that also questioned, no doubt about this thing. And the journey that we had during these 75 years is also described in terms of severe inequality which exists in the society and which is increasing after neoliberalism. In such a society, it was difficult to practice democracy. It was very difficult to develop a society in which equal treatment could be offered to everybody. It was very difficult to maintain fraternity as crisis develops in the society. और अगर हम इसको समझने की कोशिश नहीं करें गहराई से कि किस तरह ये राज्य की शक्ल बदली है, क्यों बदली है, किस ताकतों ने उनको बदलवाया है, हम इसके ऊपर ठीक से उसका सामने का जवाब राजनीतिक और सामाजिक नहीं दे पाएंगे। एक बात जरूर हुई है कि राज्य सत्ता और कॉर्पोरेट ताकतें बिल्कुल करीब आ, और अगर आप मीडिया प्रसारिता की बात और राज्य सत्ता की बात करेंगे तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट पर, हमारे सांसद पर there's a complete stranglehold on our parliamentary democracy. The number of billionaires who are sitting in parliament, those billionaires are mining owners, telecom owners and they are owners of television channels. तो ये लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह की बातें को प्रचार करना ही इसके ऊपर डिबेट्स रखना। वो चाहते हैं कि हर दिन एक दुश्मन की तरफ आपस में लोगों को पेश करवाना और कराना, ताकि शिक्षा की शुरुआत हुई, वेरी गुड, सावित्रीबाई फुले। दलितों की शिक्षा की शुरुआत हुई, ज्योतिराव फुले। ये 5 प्रकार के जब परिवर्तन आए तो इधर के राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार वो बहुत डर गए और उन्होंने एक बड़ी चालाक खेल क्या किया। उनका पावर कम हो रहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा पावर कम हो रहा है, उन्होंने कहा हमारा मजहब खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। तो मुस्लिम नवाब क्या कहेगा? इस्लाम खतरे में है। हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में है। याद रखिए दोस्तों, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। जब कुछ लोगों की सत्ता खतरे में होती है तो वो धर्म के आवरण में छुपकर अपनी बात को करते हैं। ठीक है, तो इधर से आए, शुरू में संगठन बने, ऑर्गेनाइजेशंस बने। शुरू में इनमें केवल राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे। बाद में चलकर कुछ शिक्षित लोग, बड़े बड़े वकील, बड़े मध्यम वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ गए। और यहाँ मैं 3 संगठनों के नाम आपके सामने रख रहा हूँ। 3 नामों मेरे मित्र ने पहले बता दिया, थोड़ा उसको विस्तार में कर रहा हूँ। तो पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना।
पार्टी का नाम? मुस्लिम लीग। पार्टी का नाम? अरे क्या भाई, मेरी मदद कीजिए थोड़ा सा। नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। नंबर 2, विनायक दामोदर सावरकर। आपने बताया पार्टी का नाम? हिंदू महासभा। अरे जिन्ना साहब ने कहा हम तो मुस्लिम राष्ट्र हैं। और मजा के देखिए, जिन्ना साहब का मजा देखिए और मुस्लिम लीग का मजा देखिए। वो क्या कहते हैं? हम मुसलमान यहाँ तब से एक राष्ट्र हैं जब से मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर आक्रमण करके अपना राज्य बनाया। तो उनका मॉडल क्या है? उनका मॉडल डेमोक्रेसी है कि राजाशाही है? राजाशाही। अब इधर से विनायक दामोदर सावरकर ने कहा वो हिंदू महासभा, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की। उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और इसी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर एक संगठन बना जो बाद में उसने हिंदू राष्ट्र की बात की। आज हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आज शायद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और आपको अगर गेस करना है तो आसान करने के लिए कहता हूँ, पहले ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, आरएसएस पैंट पहनते हैं, राइट? पहचान लिया आपने? कौन सा राष्ट्र चाहिए उनको? हिंदू राष्ट्र। तो ये बताइए, मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र जो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो कहां से आए? ये पुराने मूल्यों से आए। और उसको सारांश में इतना कह देता हूं, ये इधर के मूल्य, अब उसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, इनके विचारों में पता नहीं, मेरा आपको तो सब पता होगा, मैं कई सालों तक IIT में प्रोफेसर था। तो प्रोफेसर लोगों की आदत होती है छेड़खानी करने की, सवाल पूछने की। तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं भी आप एक सवाल से ही शुरुआत करता हूँ। ये बताइए कि ये भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में या 2014 में? चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरा इशारा समझ गए। क्योंकि हमारी जब आज़ादी हमको मिली, कई लोगों ने उसको आज़ादी नहीं माना और ये कहा कि हम 800 साल तक गुलाम थे। 800 साल तक कहाँ से आ गए भाई? 900 साल तक कहाँ से आ गए? तो वही वो जो मुसलमान राजा थे, औरंगजेब, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह वगैरह वगैरह, वो विदेशी थे और वो हमारे ऊपर उन्होंने राज किया, तो हमारी वो गुलामी थी। तो मैं पहले जमींदारी सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को समझना चाहता हूँ, जहाँ कानून की कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है। एक शासक है, उसके मन में जो आया वो कानून है, उसके मन में जैसा आया उसको लागू किया, उसके मन में जो आया वैसे उसका पनिशमेंट दे दिया। वो राजाशाही। और वो राजाशाही भारत में थी। और राजाशाही में भी उसके बाद एक कॉलोनियल पीरियड, उपनिवेशवाद हीरा आएगा। लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि भारत का इतना जो फूड ग्रेन्स वो लेकर गए, उसके कारण इसी बंगाल में इतना बड़ा अकाल, फेमिन हुआ था। इस बात को याद रखिए। अन्न की कमी नहीं थी, पर उनको अपनी आर्मी के लिए रिजर्व रखना था, इसलिए यहाँ का अन्न ले गए। खैर, As the crisis mounted up, then the question came in this way: there should be a society in which some नाम आपको पता है? कौन सी किताब को जलवा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति, उन्होंने जब मनुस्मृति को जलवाते समय कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को के राज्य में भी आपको चुनौती दे रही है। और मुझे खुशी है कि आपकी पार्टी ने, जो पार्टी शासक पार्टी ने, उसको रोक के रखा हुआ है और रोक के रख ही रही है। उम्मीद के साथ मैं आगे चलता हूँ तो वो पार्टी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो सवाल ये है दोस्तों कि अगर हमको आज की परिस्थिति बदलना है तो ये जिम्मेदारी केवल तीस्ता सितलवाड़ की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। हम क्या कर सकते हैं? अब एक अलग बात है, पता नहीं इसको कैसे जोड़ूं। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे मुझे कुछ माहौल बदलता चल तो रहा है, पर वो ये बंगाल से दूर है। देश ही इतना बड़ा है, जब तक ईस्ट से वेस्ट नहीं जाएगी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया ने तो उसको ब्लैकआउट कर दिया है। टेलीविजन पे दिखता नहीं है। लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, पर वो आपको तो मीडिया हमको नहीं दिखा रहा। खैर वो बात। अब सवाल ये है कि ये 4 मंजिला मॉडल है। सबसे नीचे है गलत धारणाओं का प्रचार,
मंदिर तोड़े गए, जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, 4 बीवियां 20 बच्चे, आतंकवाद वगैरह वगैरह, विदेशी एक्सेट्रा। अब इसके आधार पे, उनके आधार पे आज के मुसलमानों पे नफरत, आज के क्रिश्चियंस पे नफरत, और उस पे दूर करने के लिए उस नफरत के आधार पे दंगे, उस नफरत के आधार पे पोलराइजेशन। तो दोस्तों, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस बात को देखिए कि जो इतिहास की सच्चाई को आत्मसात कीजिए, और ये सच्चाई को आत्मसात करके, जैसे यहाँ का अड्डा कल्चर मशहूर था, इफ आई एम राइट, ऐसे अड्डे बनाइए जहाँ हम वीडियो देखें, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, किताबें पढ़ें, चर्चा करें क्या हुआ क्या नहीं, और एक ऐसे समाज को लाने की कोशिश करें जहाँ भारतीय संविधान के मूल्यों को हम मजबूत करें, भारतीय संविधान के मूल्यों को मजबूत करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। ये दोनों चीज, But there are provisions. Government can't restrict you. Then what does it mean? Government can use this tool in many ways. If I am functioning in his favor, সে একভাবে আমার কমেন্টটা দেখবে, আমার ওপিনিয়নকে দেখবে, স্পিচকে একভাবে দেখবে। If I'm against him, his views, his function, then he'll consider me his opponent. তাহলে আমার যদি কথা বলার রাইটটা প্রোটেক্টেড না হয়, ইট হ্যাজ টু বি প্রোটেক্টেড। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে লাইক আমেরিকা, যেখানে ইচ্ছেমতো সংবিধান চট করে পাল্টে নেওয়া যায় না, বাট আমাদের দেশে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে যারা পার্লামেন্টে আছেন তাদের মেজরিটি থাকলে তারা একটা আইন, there are provisions. Government can't restrict you. Then what does it mean? Government can use this tool in many ways. If I am functioning in his favor, সে একভাবে আমার কমেন্টটা দেখবে, আমার ওপিনিয়নকে দেখবে, স্পিচকে একভাবে দেখবে। If I'm against him, his views, his function, then he'll consider me his opponent. তাহলে আমার যদি কথা বলার রাইটটা প্রোটেক্টেড না হয়, ইট হ্যাজ টু বি প্রোটেক্টেড। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে লাইক আমেরিকা, যেখানে ইচ্ছেমতো সংবিধান চট করে পাল্টে নেওয়া যায় না, বাট আমাদের দেশে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে যারা পার্লামেন্টে আছেন তাদের মেজরিটি থাকলে তারা একটা আইন